See, why I'm here, why we are here is to guide you. Because without direction, speed is irrelevant. आप बहुत तेज भी चल रहे हैं लेकिन गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे. Am I right? Yes, sir. So direction is very very important to make sure कि आप ध्यान से सुने क्योंकि जो हम यहाँ बताने वाले हैं it is based on our experience है ना और experience इकट्ठा करने में बहुत समय लगता है. It takes long amount of time, good amount of time to gather experience and we are here to deliver it. जितना आप उसको ध्यान से सुनेंगे उतना आपके काम आने वाला है. And I tell you, we will give you insights which are not available on reels. आप reel देख लीजिए, वो they have बैठना किस तरह है, उठना किस तरह है ना? But that doesn't matter much. So I'll start with the notion of change. We all want to change something around us. है ना? We are living in Delhi, the capital city of India, but you will still see there are problems. There are administrative problems. There are social problems. है ना? होती है ना? We all see. And our capability to change those problems is very limited as an individual. We as an individual recognize the concept or not. Are you aware about the factual knowledge of those particular things or not? Are you mindful enough not to do silly mistakes? A है जल्दी जल्दी में B भर दिया शीट में. होता है ना कई बार भरा एमसीक्यू दिए आपने है ना ए की जगह बी भर दिया बी की जगह सी तो वो वाली मिस्टेक्स यूपीएससी में एक साल ले जाती हैं स्टूडेंट का एंड यू गेट पेनल्टी ऑफ 33%. Okay, so if first stage is the GS preliminary stage where you will be having recognized, you need to recognize the answer. This is the factual stage and ऐसा नहीं है कि एक बार पेपर दे दिया यूपीएससी आपको बैठने देगी. 2 घंटे बाद सीसैट का पेपर होगा and CSAT is much tougher than GS these days. Those who have seen CSAT paper they will get to know how difficult it is. है ना? होता है. But why UPSC क्यों पूछती है CSAT का पेपर? The idea behind CSAT paper is that you, when you will be sitting in a decision making job, in a decision making profile, they will check. Do you have logical analysis or not? Can you comprehend the information or not? Do you have the calculative mind or not? Those things are there in with you or not? And they just check it that you should have a minimum aptitude to that. So you just need to qualify it with certain like 33% marks. If you get, you will be qualified. ऐसा नहीं है कि आपको उसमें से 200 नंबर लाने हैं. You just need to score 33% marks. But it is very vital. If you don't score, तो आप GS में चाहे 200 भी नंबर लाए हो, आपको मेंस का टिकट नहीं मिलेगा. So second paper is CSAT. You need to qualify CSAT. Once you go through prelim stage, which is very important these days because most of the students get eliminated in the first stage only. Lakhs of candidates will both come, they will appear, but only few thousand will be given the ticket to mains. In mains, you have to write 4 GS paper, 1 essay paper, 2 optional paper of 1 subject, and 2 papers of language. One is compulsory language and one is of English. Language papers are again, language papers are qualifying, but rest of the paper will define your merit. To make a small correction, what the previous speaker has just said, from a dedicated student, right? I was never a dedicated student. Okay. I hope you are comfortable with English. I can also speak in Hindi. Yes, sir. या दोनों में बात करें तो चलेगा. Yes. Like जब स्कूल की बात होती है, right? from a dedicated student, I guess because मेरे report cards में, I guess red line ज़्यादा होती है. I guess आपको पता होगा red line का मतलब क्या होता है. Yes, sir. जब आप fail हो जाते हैं. ठीक है. जब journey start की थी, college में गया, right? I just talk briefly about my journey, right? Reason being, आपको बताना है कि क्या-क्या गलतियाँ मैंने करी, right? और क्या-क्या गलतियाँ हो जाती हैं, और क्या-क्या गलतियाँ नहीं करनी होती. Because your age is the one, अभी जहाँ पर आप हो, जहाँ पे अपने career का, right? कुछ लोग positively motivate करते हैं, कुछ लोग negatively motivate करते हैं, right? और negative वाला बहुत बड़ा आपका, it goes deep to you, right? जैसे अगर आप लोगों की language में कहूँ breakups आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं, right or not? Right?
तो वहाँ से चेंज हुआ। Then I started working hard. I started for more than 24 hours in a single stretch. ठीक है, क्योंकि क्लियर करने थे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, और जब ऑप्शन नहीं होता है तो आपके पास कुछ पता भी नहीं कैसे करना है, बस करना है। वो खत्म करके गॉइंग टू एसआरसीसी, वहाँ से मैनेजमेंट शुरू करा। अगेन फिर से जब एमबीए स्टार्ट किया, उसके सेकंड सेमेस्टर में समझ आया कि दिस इज अगेन नॉट थिंग। वहाँ पर भी पढ़ना शुरू करा। उसके बाद आपको पता होगा पटेल चेस पे चाय वाले बैठते हैं, देखा किसी? यस सर। कितने लोग पीते हैं? अगर कोई 2013 या 14 में होता तो मुझे नहीं लगता। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्लास खत्म करके पोस्ट लंच आई यूज्ड टू सिट देयर एंड स्टडी, राइट? जब भैया माय एल्डर ब्रदर, बिकॉज़ ऑफ whom आई एम व्हाट आई एम करेंटली, तो ही यूज्ड टू गो टू द कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो पढ़कर आते थे मुझे पढ़ाते थे। अब अभी तक वो क्या रहता है, इंजीनियरिंग के साथ कनेक्ट फील नहीं हो रहा था। एमबीए में आया तो एमबीए में कनेक्ट फील नहीं हो रहा था। द मोमेंट आई स्टार्टेड सिविल सर्विसेज, दैट इज द पॉइंट व्हेन आई गॉट द कनेक्ट। रीजन भी जब आपके आसपास आपकी चीजें चल रही होती हैं एंड व्हेन यू रियलाइज इट, लेट्स से कि इन्फ्लेशन आज 7%, 6%, 5% है, बैंकिंग रेट बढ़ गया, राइट? इंटरनेशनल रिलेशंस में आपका पाकिस्तान में आपका सर्जिकल स्ट्राइक करिए, इंडिया में सर्जिकल स्ट्राइक करिए, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से आप चीजें देखते हो, एयर पोल्यूशन अगर आप देखते हो, राइट? मल्टीपल चीजें जिसका मुझे यूटिलिटी दिखाई दे रही है मेरे सामने कि दीज आर द थिंग्स व्हिच आर इंपैक्टिंग माय लाइफ। उसको पढ़ के ज्यादा फायदा है या फिर मैं ये देखूं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या होता है? डज इट मेक सेंस और नॉट? आई गेस नहीं पता लग रहा आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है? तो दैट इज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड जर्नी, पढ़ना शुरू करा। 2015 वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, भगवान की दया से कह लो, आई रीच्ड द इंटरव्यू। बस राइटिंग स्किल्स ठीक ठाक थे, बट फेल शॉर्ट। 17 में एग्जाम दिया, गॉट इनटू द पोस्टल सर्विस। आपको तो पता होगा कि इंडियन पोस्टल सर्विस करके नाम होता है, भारतीय डाक सुना है सबने? यस सर। उसी में पोस्टमैन के ऊपर भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो नहीं पता होती। फिर 18 में आई रीच्ड टू द अगेन द इंटरव्यू, और 19 में फाइनली गॉट इट। तो जब यहाँ पहुंचा उसके पता चला कि ठीक है, सब लोग तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब आप सोचो कि अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 लाख लोग एग्जाम लिखने आते हैं, सक्सेस रेट आपका 0.00001 टाइप कुछ होता है, राइट? पर सवाल ये है कि आप कौन सी साइड देखना चाहते हो? आप फेलियर वाली साइड देखना चाहते हो कि 10 लाख में से सिर्फ 1000 बच्चे क्रॉस करते हैं, या फिर आप उन 1000 को देखना चाहते हो जो क्रॉस करते हैं? दैट्स अप टू यू, राइट? बिकॉज़ आपको कितनी सीट चाहिए होती है? एक, राइट? अब मेहनत सब करते हैं, हार्डवर्क सब करते हैं, राइट? तो फिर फर्क क्या रहेगा दोनों के अंदर? व्हाट इज रिक्वायर्ड इज अ डेडिकेटेड फोकस, द परसिवरेंस, कि अगर काम शुरू कर दिया है, पढ़ना शुरू कर दिया है, तो करना है। अभी मैम से मैं यही बात कर रहा था, व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी, माय फ्रेंड्स यूज्ड टू से कि हाउस अरेस्ट में हो गया, कि मिलते नहीं हो, किसी से बात नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो क्या? ठीक है, बात करते हैं। सर बता भी गए थे अभी सुनील सर कि इंस्टाग्राम, आप ऐसे कितने लोग इंस्टाग्राम पे हो? मेजॉरिटी सभी लोग, नहीं अच्छी बात है। One has to know what the latest trend, right? ठीक है, इंस्टाग्राम की जो लाइफ होती है इज कंप्लीटली डिफरेंट, राइट? ज्ञान देना सबको आता है, लाइफ में अप्लाई बहुत कम लोग करते हैं, राइट? आप क्या देखते हो? अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आईएएस सुनते हो तो आपके दिमाग में पहली चीज क्या आती है? हार्ड वर्क। आओ, हाँ, दैट्स एन ऑनेस्ट आंसर, आई गेस। ठीक है, और बड़े बंगले दिखते हैं। यस सर। अब ये पिक्चर का आधा साइड, जब आप पीछे आते हो, राइट, जब आप रियल लाइफ में जाते हो, ये वो चीजें हैं जो आपको दी जाती है ताकि जस्ट टू फैसिलिटेट यू इन ऑर्डर टू एंश्योर कि आपका दिमाग इन सब चीजों में ना लगे, राइट? अगर मान लो आप एक रूम में बैठे हो, वहाँ पे पानी लीक कर रहा है, दरवाजा टूटा हुआ है, खिड़की टूटी हुई है, तो आप काम करोगे, आपका ध्यान वहाँ पर जाएगा। अगर आप फील्ड पे जाते हो, आपको पॉजिटिवली अपना काम करवाना है, राइट? व्हाट इज गुड, आपको असर्टिवनेस दिखाने के लिए, डू यू नीड अ पुलिसमैन और यूनिफॉर्म पर्सन और नॉट? यस सर। शोबाजी के लिए नहीं होता है, जस्ट टू शो दैट यस देयर इज एन अथॉरिटी व्हिच इज सेइंग एंड इट हैज टू बी डन, ठीक है? अब एग्जाम के बारे में आई गेस आप लोगों में से कितने लोगों ने कभी एग्जाम दिया है? दिया तो नहीं, जैसे पता तो चले, कितने लोगों ने पेपर देखा है? क्या आपका पहला इसका ओपिनियन आता है? व्हाट डू यू थिंक? बहुत हार्ड है। बहुत हार्ड। अच्छा ठीक है, और किसी का? हाँ, अच्छा बस्सी का वीडियो कितना देखा यूपीएससी के लिए? क्या लगा उसमें? एनीथिंग, ऑनेस्टली बताओ क्या लगा? कितनी रियलिटी लग रही है उसमें? आपको से क्या लगा? आई रिजाइन। सी, पेपर जब बनता है ताकि आपको चेक कर सके, बस प्रोसेस एग्जाम जो है उस पहले दिन से स्टार्ट हो जाते हैं लक्ष्य, क्योंकि जब इतना हार्ड वर्क करते हो, वो कंसिस्टेंटली आपको जब सर्विस के अंदर एंटर कर जाते हो उससे ज्यादा ही करना पड़ता है, और प्रिपरेशन का टाइम सबसे ज्यादा इजी होता है। ट्रस्ट मी, इट इज द इजीएस्ट प्रोसेस ऑफ द एंटायर 30 ऑड इयर्स ऑफ द सर्विस। वरना हर दिन आप ये सोचते हो कि यार कहीं लॉर्ड ऑर्डर इशू ना हो जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, आपके बैक ऑफ द माइंड में यही चलता है, राइट? बट एवरी डे इज अ सर्वाइवल। I got a call that
one person has fell off from the cliff and he drowned, he died. So next day his body was recovered. So we as magistrates are empowered with one power that I really like the most, which is the family called up, that's sir, we want to meet. I said, okay, come. So they were the boy who died, his mother was there, his father was there, I guess his sister was also there. 3 or 4 people were there. So they came with a request to exempt the post-mortem. Right? Now think from this perspective, if somebody has gone from such a big loss and one single signature of yours can exempt the post-mortem of a body. Right? That's a human. That's really nice, but yes, it has got something in it. Right? Provided there's no false claim. That was the best experience I can share with that. Second comes with respect of, we recently developed, me and my deputy commissioner, we developed an application for the teachers. So that application was an attendance-based system, which was based on artificial intelligence and GPS coordinates. So what happens is, first in our state, there are not in our state, in the entire country, there are instances of teacher absenteeism, right? Or somebody else is recruited and somebody else is doing the job. So what we did, we got the system into place around 2,500 or some odd teachers were there. So we even saw the rage, right, from the teacher community, that how you can do this, this is not done, you're questioning our integrity, etc. But you have to take such steps. So that was again the point of satisfaction which I felt that yes, one change if you want to do, you can do. And talking about daily basis, see, कुछ तो minimum standard रखना पड़ेगा ना पढ़ने का, कि इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है, right? If you are doing 6 to 8 hours of your hard work daily, more than sufficient. Why? बस कभी कभी मन होगा, एनर्जी लेवल्स हाई होंगे, आप 10 घंटे 12 घंटे पढ़ पाओगे. कभी कभी you be लो हो गए तो उस टाइम उस पर 2 या 3 घंटे. It has to be a balance, and more than clock, it has to be your orientation in terms of आपने कितना उस दिन के लिए डेडिकेट करा है कि यार मेरा इतना काम